and a new year begins, the long-awaited normality still eludes global economy. The years 2020 to 2023 will perhaps go down in history as the period of great volatility, comprising a host of black swan events in quick succession. The global economy is showing signs of slowdown, though unevenly across geographies and sectors. The emerging market economies, that is EMEs, as a group have remained resilient during the current bout of volatility, unlike previous episodes. While headline inflation has receded from the highs of last year, it remains above target in many countries. Core inflation continues to be sticky, impeding the last mile of disinflation. Major central banks have kept rates on hold while refraining from forward guidance in view of the prevailing uncertainties. Financial markets remain volatile in their quest for definitive signals about the future path of interest rates. Against this unsettled global environment, the Indian economy presents a picture of resilience and momentum. The real gross domestic product, that is GDP growth for Q2 of the current financial year, has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course, external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. These factors, combined with consumer and business optimism, create congenial conditions for sustained growth of the Indian economy. Looking ahead, it is our endeavor to further build on these fundamentals, which are the best buffer against global supply shocks in today's uncertain world. Let me now turn to the decisions and the deliberations of the Monetary Policy Committee, which was held, as you know, on 6th, 7th, and today 8th of December. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, CPI headline inflation moderated to 4.9% in October from 7.4% in July. The moderation was observed in all components of CPI, namely food, fuel, and core, that is CPI excluding food and fuel. There has been broad-based easing in core inflation, which is indicative of successful disinflation through monetary policy actions. The near-term outlook, however, is masked by risks to food inflation, which might lead to an inflation uptick in November and possibly in December. This needs to be watched for second-round effects, if any. Domestic economic activity is holding up well, as assessed in the previous MPC meetings and as reflected in the GDP growth for the second quarter of this year. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, but remain highly alert and prepared to undertake appropriate policy actions as warranted. Monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure fuller transmission and anchoring of inflation expectations. The rate action so far is still working its way into the economy. Hence,
the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that, as I have already stated, to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I would now like to provide an assessment of the growth and the inflation situation. First, let me focus on global growth in brief. The global economy continues to remain fragile. World trade is decelerating amidst global tide of protectionism. Despite significant restoration of global supply chains, factors like elevated debt levels, lingering geopolitical hostilities, and extreme weather conditions aggravate the risks to global growth and inflation outlook. Easing of inflation in advanced economies has led to expectations of an early end to the monetary policy tightening cycle, shoring up market sentiments. Sovereign bond yields are softening as markets are not factoring in any further rate hikes. Coming to domestic growth, economic activity in India exhibited buoyancy in the second quarter of this year, aided by strong domestic demand. GDP growth, as you would know, posted a robust growth of 7.6% in the second quarter of this year, that is 2023-24, driven largely by investment and government consumption. Turning to the third quarter, two-thirds of Rabi sowing has been completed despite late harvest of Kharif crops in some states. Manufacturing sector gained strength with easing input cost pressures and pickup in demand conditions. 8 core industries recorded healthy growth in October and continued their high growth since June this year. The Purchasing Managers Index, that is the PMI for manufacturing, rose in November. The services sector buoyancy has remained intact as reflected in the high frequency indicators which the Reserve Bank monitors. GST collections at rupees 1.68 lakh crore in November 2023 were also buoyant. Services PMI displayed healthy expansion in November. In my statement, there is a lot of data available which I have put in the footnote, so those of you who are interested can have a look at the footnotes. The entire data in support of whatever I am saying is available in the footnotes. On the demand side, households' consumption is supported by durable urban demand and gradual turnaround in rural demand as reflected in sales of fast-moving consumer goods, that is FMCG, and other indicators. Festival-related demand is also spurring household discretionary consumption in the third quarter, that is in the current quarter. Investment activity continues to be aided by buoyancy in public sector capex. This is also reflected in strong growth in steel consumption, cement production, and imports of capital goods. Capacity utilization in the manufacturing sector continues to remain above the long period average. Investments in fixed assets by listed private sector manufacturing companies also registered healthy growth in the first half of 23-24. Primarily driven by key industries such as petroleum, steel, chemicals, and cement. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 17.6 lakh crore during the current financial year so far is significantly higher than that of last year, which was at rupees 14.5 lakh crore. Despite weaknesses in external demand, both goods and services exports returned to positive territory during the month of October this year. Looking ahead, private consumption should gain support from gradual improvement in rural demand, strengthening of manufacturing activity, and continued buoyancy in services. The healthy twin balance sheets of banks and corporates, high capacity utilization, continuing business optimism, and government's thrust on infrastructure spending should propel private sector capex.
The drag from external demand is also expected to moderate with a turnaround in merchandise and services exports. The protracted geopolitical turmoil, volatility in global financial markets, and growing geoeconomic fragmentations, however, pose risks to the outlook. Now, taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first three quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5%, and Q3 at 6.4%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Food inflation, which was in double digits in July, has since then moderated to 6.2% in October, with correction in vegetable prices. Fuel inflation slipped into deflation since September, primarily reflecting the sharp fall in LPG prices in end August. The disinflation in core gathered momentum during September-October and reached levels last seen in the fourth quarter of 2019-20 due to the combined effect of policy rate increases and reduction in cost push pressures across core goods and services. Going ahead, inflation outlook would be considerably influenced by uncertain food prices. High-frequency food price indicators point to an increase in prices of key vegetables, which may push CPI inflation higher in the near term. The ongoing Rabi sowing progress for key crops like wheat, spices, and pulses needs to be closely monitored. Elevated global sugar prices is also a matter of concern. On the positive side, global commodity prices, particularly agricultural commodities, have softened except rice. For highly import-dependent food items like edible oils, international prices continue to remain soft. Domestic milk prices have stabilized. Proactive supply-side interventions by the government are also containing domestic food price pressures. Crude oil has softened considerably, though it may remain volatile. Taking into account these factors and on the assumption of normal monsoons, CPI inflation is projected at 5.4% for the current year, that is 2023-24, with the third quarter at 5.6% and the fourth quarter at 5.2%. CPI inflation, and here again we are giving for the first three quarters of next year, CPI inflation for the Q1 24-25 is projected at 5.2%, Q2 at 4%, and Q3 at 4.7%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? Let me provide our assessment. We have made significant progress in bringing down inflation to below 5% in October 2023, despite occasional blips due to intermittent supply shocks. The summer of 2022 is behind us. Our policy of prioritizing inflation over growth, hiking the interest rates, that is policy rate, by 250 basis points in a calibrated manner, and draining out excess liquidity have worked well, alongside supply-side measures taken by the government to bring about this disinflation. The fact that core inflation has also trended lower
and household inflation expectations have become better anchored gives us the confidence and conviction that monetary policy is doing its job. On the other hand, growth remains resilient and robust, surprising everyone on the upside. Notwithstanding this progress, the target of 4% CPI is yet to be reached, and we have to stay the course. Headline inflation continues to be volatile due to multiple supply-side shocks, which have become more frequent and intense. The trajectory of food inflation needs to be closely monitored. Intermittent vegetable price shocks could once again push up the headline inflation in November and, as I said, possibly December. While monetary policy would look through such one-off shocks, monetary policy has to stay alert to the risk of such shocks becoming generalized and derailing the ongoing disinflation process. In the midst of these uncertainties, monetary policy has to remain actively disinflationary to ensure a durable alignment of headline inflation to the target rate of 4% while supporting growth. I would now like to focus on the liquidity and financial market conditions. Like most other central banks, the Reserve Bank had injected additional liquidity into the system to counter the COVID-related onslaught on our economy. Consequently, the size of the Reserve Bank's balance sheet had expanded significantly. Persistence of such expanded balance sheet far too long could have created macroeconomic and financial instability. It is worth noting that the Reserve Bank has successfully reduced its balance sheet size well in time. Illustratively, the size of Reserve Bank's balance sheet swelled to 28.6% of GDP in 2020-21. With modulation in liquidity in the post-COVID period, the balance sheet size moderated to 23.3% of GDP in 2022-23 and further to 21.6% in the current financial year up to December 1. We consider this as a significant achievement. System liquidity as measured by net position under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF, turned into deficit mode for the first time in September this year, after a gap of nearly 4.5 years since May 2019. Deficit liquidity conditions persisted during October and November, prompting large recourse to marginal standing facility, that is MSF, by the banks. In parallel, utilization of standing deposit facility, that is SDF, has also been high. The overall tightening of liquidity conditions is attributed mainly to higher currency leakage during the festive season, government cash balances, and Reserve Bank's market operations. Driven by these autonomous factors, system liquidity tightened significantly compared to what was envisaged in the October policy statement. Consequently, the need to undertake auction of OMO sales has not arisen so far. The evolution of liquidity conditions has been in alignment with the monetary policy stance. More recently, however, as government spending has picked up and system liquidity has got more evenly balanced among market participants, pressures have eased and the net LAF position has evened out broadly. Going forward, government spending is likely to further ease liquidity conditions. On our part, the Reserve Bank will remain nimble in liquidity management. Now, different segments of the financial markets have witnessed monetary transmission of varying extent. Long-term G-Sec yields have softened, reflecting strong demand for these bonds from financial institutions and softening of global bond yields. In the credit market, monetary policy transmission is still working its way through the system, and the supporting data is provided in the footnote. With regard to standing facilities of the Reserve Bank under the LAF, we have noticed, as I pointed out,
we have noticed simultaneous high utilization of both MSF and SDF by the banks. This was also pointed out by me in the last monetary policy statement. We propose to address this situation and have therefore decided to allow reversal of liquidity facilities under both SDF and MSF even during weekends and holidays with effect from December 30, 2023. This is an important announcement so far as the banks and the liquidity situation is concerned. So let me just read it again. We have decided to allow reversal of liquidity facilities under both SDF and MSF even during weekends and holidays with effect from December 30 this year, that is December 30, 2023. It is expected that this measure will facilitate better fund management by the banks. This measure will be reviewed after 6 months or earlier if needed. The Indian rupee has exhibited low volatility compared to its EME peers in the calendar year 2023, despite elevated US Treasury yields and a stronger US dollar. The relative stability of the Indian rupee reflects the improving macroeconomic fundamentals of the Indian economy and its resilience in the face of formidable global tsunamis. Recently, the Reserve Bank and the Bank of England have signed a memorandum of understanding on cooperation and exchange of information relating to the Clearing Corporation of India, which is a central counterparty that is regulated and supervised by the Reserve Bank. The MOU will enable the Bank of England to assess CCIL for recognition as a third country CCP, that is central counterparty, for UK-based banks to clear their transactions through CCIL. This MOU is based on the principles of mutual cooperation and trust among the regulators of both the countries, that is India and England. We hope the regulators of other jurisdictions also accept these principles. Financial stability, I would now like to just focus briefly on the aspect of financial stability. Financial stability, as we have stated before, is a public good. The Reserve Bank judiciously uses micro and macro-prudential tools to safeguard financial stability. The recent preemptive measures taken by the Reserve Bank in respect of banks and NBFCs were geared towards addressing potential risks and preserving the resilience of the financial sector. We do not wait for the house to catch fire and then act. Prudence at all times should be the guiding principle, should be the guiding philosophy, both for the regulators as well as the regulated entities. I now propose to turn to the external sector. In October this year, both merchandise exports and imports came back to the expansionary zone. Services exports remained buoyant during the second quarter of this year. India has remained the top remittance receiving country. The net balance under services and remittances is expected to partly offset India's current account deficit and keep it within the parameters of viability. On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a significant turnaround during the current year, with net FPI inflows of US $24.9 billion up to December 6, as against net outflows in the preceding 2 years. Net foreign direct investment, that is FDI, on the other hand, moderated to US $10.4 billion in April-October this year from US $20.8 billion a year ago. Net inflows under external commercial borrowings, that is ECBs, and non-resident deposit accounts are, however, much higher than last year. India's external vulnerability indicators exhibit higher resilience in comparison with EME peers, as well as since
the taper tantrum period. India's foreign exchange reserves stood at 604 billion US dollars as on 1st December 2023. We remain confident of meeting our external financial requirements comfortably. I would now like to announce certain additional measures. First one relates to review of regulatory framework for hedging of foreign exchange risks. The regulatory framework for foreign exchange derivative transactions was last reviewed in 2020. Based on market developments and feedback received from market participants, the extant regulatory framework for forex derivative transactions has been refined and consolidated under a single master direction. This will further deepen the forex derivatives market by enhancing operational efficiency and ease of access for the users. The next announcement relates to framework for connected lending. The extant guidelines on connected lending are limited in scope. It has been decided to come out with a unified regulatory framework on connected lending for all regulated entities of the Reserve Bank. This will further strengthen the pricing and management of credit by the regulated entities. The next announcement relates to regulatory framework for web aggregation of loan products. The Reserve Bank had introduced the regulatory framework for digital lending in August-September 2022. The digital lending ecosystem also comprises of services that aggregate loan offers from various lenders, and this is called web aggregation of loan products. Now, this is meant for the guidance of the customers. It enables the customers to decide which loan product to opt for. Several concerns relating to such web aggregation of loan products which harm consumers' interest have come to our notice. It has therefore been decided to lay down a regulatory framework for web aggregation of loan products. This is expected to result in enhanced customer centricity and transparency in digital lending. Next announcement relates to setting up of a fintech repository. Financial entities like banks and NBFCs in India are increasingly partnering with fintechs. For better understanding of developments in the fintech ecosystem and to support this sector, it is proposed to set up a fintech repository. This repository will be operationalized by the Reserve Bank Innovation Hub in April 2024 or earlier. Fintechs would be encouraged to provide relevant information voluntarily to this repository. The next announcement, there are two announcements relating to UPI. The first announcement relating to UPI is for enhancing the UPI transaction limit for specified categories. The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. The second announcement relating to UPI relates to, it relates to e-mandates for recurring online transactions. It's actually, it's a much broader announcement. It relates to e-mandates for recurring online transactions, and specifically it focuses on enhancement of limit for specified categories. E-mandates for making payments of recurring nature have become popular among customers. Under this framework, an additional factor authentication is currently required for recurring transactions exceeding rupees 15,000. It is now proposed to enhance this limit to 1 lakh rupees per transaction for recurring payments for mutual fund subscriptions, insurance premium subscriptions,
and credit card repayments. This measure will further accelerate the usage of e-mandates. So strictly speaking, this is not a part of UPI alone. I mean, it's a wider, it has got wider ramifications. And the last announcement that I have, it relates to establishment of a cloud facility for the financial sector in India. Banks and financial institutions are maintaining an ever-increasing volume of data. Many of them are utilizing the cloud facilities for this purpose. The Reserve Bank is working on establishing a cloud facility for the financial sector in India for this purpose. Such facility would enhance data security, integrity, and privacy. It would also facilitate better scalability and business continuity. The cloud facility is intended to be rolled out in a calibrated fashion over the medium term. I would now like to conclude. In a global economy clouded by uncertainties, monetary policy actions and communication can be a stabilizing force by anchoring the expectations of economic agents. Clarity and consistency in action and communication is a time-tested principle for effective monetary policy. Policymakers have to be mindful of the risk of being carried away by a few months of good data or by the fact that CPI inflation has come within the target range. They have to be also mindful of the risk of over-tightening, especially when large structural changes, geopolitical and geoeconomic shifts are taking place. On top of this, they have to be watchful of the risks from new shocks that could hit the economy from anywhere, anytime. We have now reached a stage when every action has to be thought through even more carefully to ensure overall macroeconomic and financial stability, more so because the conditions ahead could be fickle. We have to remain vigilant and ready to act as per the evolving outlook. India is better placed to withstand the uncertainties compared to many other countries. As the Indian economy trades the path, let me repeat, as the Indian economy trades the path to a brighter future, I recall the wise words of Mahatma Gandhi, and I quote, "Progress is absolutely assured whenever there is an unalterable determination." Thank you. Namaskar. थैंक यू वेरी मच गवर्नर साहब, बिल्कुल आपने वैसी ही पॉलिसी दी और वैसा ही सब कुछ किया और कहा जो हम सोच रहे थे, हमारा पूरा पैनल सोच रहा था। उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी और निफ्टी अब 21,000 पर, जी हां, लाइफ टाइम हाई पर पहुंचते हुए 12,000, पहली बार एडल्ट और इंडिपेंडेंट बनता हुआ निफ्टी आपके लिए 21,000 के पार। जो कुछ कहा है पॉलिसी में गवर्नर साहब ने, जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं। पहली और सबसे अहम चीज, किसी तरह का कोई बदलाव महंगाई के लक्ष्य में नहीं किया गया है। इन्फ्लेशन के टारगेट पूरे साल भर के लिए, चाहे हर एक क्वार्टर के लिए, आने वाले समय के लिए बिल्कुल जस के तस रखे गए, यानी कि इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई के रुख में कोई बदलाव नहीं। लेकिन जहां बदलाव आप देखना और सुनना चाहते थे जीडीपी ग्रोथ को लेकर, वो बिल्कुल आते दिखे। आरबीआई ने अपना जीडीपी का अनुमान इस वित्त वर्ष के लिए 6.5% से बढ़ाकर 7% किया है। ये बाजार को पसंद आने वाली बात। तो इसी के बाद बाजार ने 21,000 का हाई छुआ है। 6 में से 6 सदस्यों ने कहा है ब्याज दरों में कोई बदलाव की जरूरत नहीं, और 6 में से 5 सदस्यों ने कहा है कि जो अकोमोडेशन वाला स्ट्रेंथ है उसको धीमे धीमे खत्म किया जाए, पॉलिसी थोड़ी सी वहां पर हुकिश रखी जाए। ये बड़ा बदलाव होता दिखा है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा, जरूरत पड़ने पर जिस तरह के एक्शन की जरूरत होगी हम जरूर लेंगे। जीडीपी की आंकड़े जो दूसरी तिमाही के आए हैं उम्मीद से बेहतर आए हैं, और इसी के चलते हम जीडीपी का टारगेट पूरे साल के लिए बढ़ा रहे हैं। एक अच्छी बात जो गवर्नर साहब के भाषण में मुझे समझ में आई, उनका यह कहना था कि देखिए ग्रामीण इलाकों से डिमांड अब बेहतर होती हुई दिख रही है। पहले ग्रामीण इलाकों में मांग की सुस्ती को लेकर गवर्नर साहब ने कुछ बातें जरूर पिछली पॉलिसीज में कही थी, लेकिन आज वहां पर वो बड़े मजबूती के साथ कहते नजर आए। पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी, यहां पर कैपेक्स साइकिल बहुत अच्छा मजबूत होता दिख रहा है, इससे बड़ा फायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लोकल डिमांड यानी कि घरेलू बाजार बेहद मजबूत है, इकोनॉमी अच्छी क्षेत्र में, अच्छी हेल्थ में है। हाँ,
ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में उनका ये जरूर कहना था कि अभी भी मुश्किलें हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो महंगाई को लेकर गवर्नर साहब चाहते हैं, कोर इन्फ्लेशन धीमे धीमे नीचे आता हुआ दिख रहा है और वो बड़े फायदे की बात है। और उसके नीचे आने के पीछे वजह एक ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो कम होती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कैपेक्स और डोमेस्टिक डिमांड बहुत ऊंची है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो गवर्नर साहब ने आज अपनी पॉलिसी में कहे हैं और इसके बाद बाजार के लिए पॉलिसी डेफिनेटली पॉजिटिव मानी जाएगी। 21,000 के बेहद करीब है निफ्टी, इतिहास में दर्ज हो चुका है आंकड़ा 21,006 हाई का और 47,000 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ बैंक निफ्टी 0.5% की मजबूती के साथ ये आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल सुबह से हमारे साथ है, हमारे रेगुलर एक्सपर्ट्स तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा अतुल जोशी साहब, अजय बग्गा साहब, हेमांग जानी साहब हमारे साथ हैं, सुनील मेहता साहब IBS से और साथ ही गुरमीत चड्ढा साहब भी हमारे साथ पॉलिसी का पूरा विश्लेषण देने के लिए जुड़ चुके हैं। आइए एक बार जल्दी से इन सारे एक्सपर्ट से एक एक करके मैं राय लूं। बग्गा साहब शुरुआत करें, बताएं सर सबसे एक बड़ी बात जो पॉलिसी में आपको लगी गवर्नर साहब से। अनिल जी, कंटिन्यूटी है। फरवरी में लास्ट टाइम बढ़ाया गया था रेट और उसके बाद ये 5वां पड़ाव है जबकि पॉज है, तो कंटिन्यूटी है पॉलिसी की। आगाह भी कर रहे हैं इन्फ्लेशन पे, बट ग्रोथ की तरफ तवज्जो है। तो ओवरऑल 6/6 है हमारा फोरकास्ट। GDP में आंकड़ा हमने दिया था 6.7, शायद बढ़ाएंगे, 7 कर दिया, तो दमदार ग्रोथ दिख रही है। सेकेंड हाफ में भी मैंने कहा था कि इस क्वार्टर में जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बट अगले क्वार्टर भी स्ट्रांग ग्रोथ जताई है और 7% पे लेके आए हैं सालाना GDP। इन्फ्लेशन में कोई तब्दीली नहीं, रेट्स में कोई तब्दीली नहीं, लिक्विडिटी में एक और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की है बैंक्स को कि आपने जो STF या MSF में ट्रांजैक्शन किया है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं हॉलीडेज को भी। अब ये कैसे लागू होगा वो डिटेल्स देखने पड़ेंगे, बट फ्लेक्सिबिलिटी होता है। अनिल जी, क्या हो जाता है, फ्राइडे तक नॉर्मली ट्रेजरी हमें बोलता था कि बड़ा आप डील मत करिएगा क्योंकि मैंने बैंक्स का बुक बैलेंस कर लिया है, ये पैसा जुटा लिया। तो अगर फ्राइडे शाम को कोई ज्यादा बड़ा पैसा आ रहा होता था हम कॉन्स्ट्रेन हो जाते थे। अब अगर सैटरडे संडे को या हॉलीडे को आप इसको रिवर्स कर सकते हैं तो बैंक ट्रेजरर्स के लिए एक बहुत वेलकम मूव हो जाता है। और साथ में गांधी जी का कोट भी आया, हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा, यही हमारा 6/7 आप कह सकते हैं, 1/7। ना 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 नहीं 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 बग्गा साहब, यू मिस्ड इट। क्या बात कर रहे हैं सर? एक्चुअली आपने 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 इंतजार किया आखिर में हैप्पी न्यू ईयर का, उन्होंने शुरुआत ही हैप्पी न्यू ईयर से कर दी। मैंने सुना, जोशी साहब आपने भी सुना? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में ही कह दिया। ओके, क्योंकि अनिल जी मेरा ऑडियो ना 1 मिनट लगा था ऑडियो आने में, तो वो आई थिंक स्काइप पे ऑडियो नहीं आया तो इसलिए मिस हो गया। तो 7/7 अनिल जी आप हमें 7/7 दे सकते हैं। सर स्टूडियो में आया कीजिए सर, अब तो आपके लिए वो फ्लाईओवर भी खुलवा दिया हमने लोअर परेल का, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। तो जो मजा, मैं तो खुद जो अतुल सर को मिस कर रहा हूँ, मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ, ट्रैवल पे हूँ। मजा जो स्टूडियो में आपके साथ बैठ के पॉलिसी देखने करने का है उसकी तो बात ही क्या है। अच्छा अतुल सर बताइए, आपको क्या खास बात लगी सर? देखिए, एक ट्रेंड अभी RBI ने सेट किया है कि Q1 का जो GDP होता है सबसे हाई होता है और फिर धीरे 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 करके वो हमेशा GDP कम करते जाते हैं। ये उनका एक प्रोजेक्टेड ट्रेजेक्टरी का एक नया ट्रेंड पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। जैसे कि अगर हम Q3 Q4 की बात करें तो Q2 में हमने 7.6% देखा है, वो घट के 7.6 से 6.5 हो जाएगा, 6.5 से घट के 6% हो जाएगा। दैट मीन्स के अगले 6 महीने में GDP हम 1.5% से गिरता हुआ दिखेंगे। लेकिन जैसे ही Q1 FY 24-25 आता है वो बढ़ के 6.5% हो जाता है। तो उसका क्या कारण है कि गिर रहा है, सडनली वापस बढ़ रहा है। तो ये जो उन्होंने नया ट्रेंड GDP की प्रोजेक्शंस के लिए दिया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या वजह हो सकती है कि इतना स्टीप फॉल और फिर सडनली एक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ही सिग्निफिकेंट है, शायद इसकी बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम
जो वेजिटेबल्स की प्राइस है जो सडन स्पाइक हो जाती है फिर गिर जाती है, और जिसकी वजह से सीपीआई के हेडलाइन नंबर में वॉलेटिलिटी आती दिखती है कि भाई 7.5% हो गया, फिर गिर के 4.5% हो गया 3 महीने में, फिर से बढ़ के 5.5% हो गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है उसको वो आगे चल के इग्नोर करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ी सीपीआई को दो मामलों में देखना पड़ेगा। एक होगा कि ये कौन सा पोर्शन सीपीआई का वॉलेटाइल है और शॉर्ट टर्म है। अगर वो शॉर्ट टर्म और वॉलेटाइल है तो उसके हिसाब से आरबीआई की पॉलिसी नक्की नहीं की जाएगी, चाहे उसका आंकड़ा कुछ भी हो। तो मोर और लेस वो कह रहे हैं कि हम कोर सीपीआई के ऊपर शायद थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो वेजिटेबल्स, खास करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह की जो वॉलेटाइल प्राइस है उसको हम इग्नोर करेंगे। शायद लॉन्ग टर्म में ये भी हो सके कि वो वेटेजेस शायद चेंज कर दे, जो काफ़ी वॉलेटाइल आइटम्स है उसके वेटेजेस चेंज हो सके। और एक मुझे ये लगता है कि उन्होंने वेदर के ऊपर काफ़ी बातचीत की, तो शायद उनके दिमाग में भी वही चल रहा है कि आज से जो आगे चल के हमारा पीरियड आने वाला है अगले कुछ सालों के लिए, तो उसमें वेदर को रिलेटेड काफ़ी वॉलेटिलिटी अब से परमानेंटली बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, अब ये परमानेंट वेदर वैगरीज रहेंगी। तो थोड़ा मेरे ख्याल से सीपीआई कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इफ़ नॉट इमीडिएटली अगले 2 साल 3 साल में हम चेंज होते हुए या उसके वेट्स को चेंज होते हुए देख सके, ऐसा मुझे मानना है। लेकिन एक बात तो है कि इग्नोर कर देंगे वॉलेटिलिटी, हमें वो डिस्कशन अभी नहीं करना है कि अगर वेजिटेबल्स की प्राइस ऊपर गई, सीपीआई ऊपर हो गया, तो क्या आरबीआई होल्ड करेगी या आरबीआई रेट बढ़ाएगी, वो आई थिंक इज आउट ऑफ द डिस्कशन नाउ। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा बदलाव आपके लिए आता दिख रहा है। पॉलिसी से बैंक्स के लिए क्या कुछ संदेश मिलते हुए दिख रहे हैं? आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील मेहता साहब, सर गुड मॉर्निंग। बताएं सर, बैंक्स के लिए क्या संदेश है गवर्नर साहब की तरफ से? देखिए, जो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया और जो पॉलिसी रेट्स में चेंज नहीं किया, दैट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। और इकोनॉमी के बारे में तो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने अच्छा बता दिया। बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से मैं 2-3 बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स इस पॉलिसी के अंदर देख रहा हूं। आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में जो पेमेंट स्पेस है वो पहले से डिजिटलाइज हो चुकी है, और अब जो बैंकिंग सेक्टर है वो लैंडिंग स्पेस में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आ गया है। बहुत सारी ऐसी वेब पोर्टल्स आ गए हैं जहां पर जो डिजिटल लैंडिंग के अंदर एग्रीगेशन का काम हो रहा है। तो नाउ आरबीआई ने डिसाइड कर लिया कि उन सबको भी रेगुलेटेड किया जाएगा, और फिनटेक्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी डेटा इन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकें, विच विल बी रेगुलेटेड एज वेल एज स्टोर्ड आल्सो। तो इससे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी बैंकिंग सेक्टर को और कंज्यूमर को टू अवेल दी डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट्स विद मोर ऑथेंटिसिटी एंड कन्वीनियंस। तो नंबर ऑफ फ्रॉड्स होने के स्कोप को भी कम हो जाएंगे, और कन्वीनियंस ऑफ अवेलिंग लोन फैसिलिटी विल भी बहुत बढ़ेगी। दूसरा जो बहुत मेजर इंप्रूवमेंट उन्होंने सजेस्ट किया, आई थिंक पूरा बैंकिंग सेक्टर इस बारे में सोच रहा था, क्योंकि क्लाउड जो है, इतनी क्लाउड सर्विसेज इंडिया में अभी अवेलेबल हैं, ज्यादातर वो विदेशों में बेस्ड क्लाउड सर्विसेज हैं। तो वो जो सर्विसेज हैं उसके बारे में कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज बने तो बैंकिंग सेक्टर को भी ये डर रहता था, और रेगुलेटर की भी रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप डेटा जो है इनलैंड सपोर्ट करिए, और अगर आपका डेटा किसी दूसरे के पास में है और वक्त जरूरत पे वो डेटा आपको नहीं मिला या गलत तरीके से मिला, तो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ सकता था। सो अभी जो आरबीआई ने बोला कि हम लोग एक कम्युनिटी क्लाउड जो है विद इन इंडिया में आरबीआई के द्वारा बनाया जाएगा, और आरबीआई का द्वारा इस काम को किया जाएगा, तो ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपनी कैपेबिलिटीज को, डिजिटल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स होगा जहाँ पे वो अपने पूरे डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, और क्लाउड सर्विसेज की बेसिस पे अपना डिजिटल एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत कन्वीनियंस देगी डिजिटल लैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, और एफिशिएंसी इन डिजिटल स्पेस में बैंकिंग सेक्टर के लिए लाने के लिए। उसमें कॉस्ट का भी ऑप्टिमाइजेशन होगा एंड एफिशिएंसीज का भी इंप्रूवमेंट होगा। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ बड़े संदेश गवर्नर साहब की तरफ से पॉलिसी में आते हुए दिख रहे हैं। बाजार के लिए क्या डायरेक्शन है? गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल वेल्थ से। गुरमीत सर बताएं, बाजार खुश तो पहले से ही है, मतलब अपनी खुशी बरकरार रखे और बढ़ाएं? मेरे ख्याल बरकरार रखे और ना बढ़ाएं अनिल जी, बट बरकरार रखने से ही काम हो जाएगा। आप देखिए 3-4 चीजें बहुत जो मुझे पसंद आई। ये हम आरबीआई के रोल को बड़ा अंडररेट करते हैं, जो कोविड में मेरे ख्याल से बेस्ट सेंट्रल बैंक के रूप में आया है, हर चीज में प्रोएक्टिव रहा है, बड़ा बैलेंस्ड कम्युनिकेशन है। अजय जी ने जैसे बोला, एक कंटिन्यूटी होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, रैटल नहीं करते हैं मार्केट्स को,
और प्रोएक्टिव मेजर्स होते हैं। आप देखिए बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी पिछली बार आरबीआई पॉलिसी पे, जब ओएमओ की बात हुई थी 740 750 चला गया था, और अब उन्होंने आज बोला कि ओएमओ की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिस्टम लिक्विडिटी जो है मैनेजेबल होगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। आप देखिए वापस से 724 आ गया है 10 ईयर। यूएस में भी आप देखिए जब भी ये 10 ईयर यील्ड ऊपर जाती है तो विड्रॉल होता है, तो वहां भी जब 5% गया था तो मैसिव करेक्शन आया था, अभी वापस से 4-10 है। तो ये मुझे लगता है जो जिस हिसाब से हमने बॉन्ड मार्केट को मैनेज किया है, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आने दिया इस पूरे पीरियड में, ये कमेंडेबल है। दूसरी चीज जो आपने भी बताया कि रूरल डिमांड, तो उन्होंने बोला कि टर्न अराउंड है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इनफैक्ट एक पॉइंट उन्होंने और बोला कि जो राबी सीजन का सोइंग है वो लगभग 2/3 हो गया है, जबकि हार्वेस्ट लेस्ट हुआ था खरीफ क्रॉप का। मेरे हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। प्लस उन्होंने बोला आरबीआई की बैलेंस शीट 4.5 साल में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लोएस्ट है। तो ये उन्होंने मतलब ये दिखाता है कि कितने अच्छे से पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मैनेज हुआ है। तीसरा मुझे लगता है जो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया रिटेल लोन पे, उन्होंने वो प्रोएक्टिव मेजर लिया है। उन्होंने बोला हम वेट नहीं करेंगे फॉर हाउस टू कैच फायर। ये अपने आप में बताता है कि वो कितने सिस्टम में ग्रास रूट है। हमने देखा फिर कुछ फिनटेक्स ने, पेटीएम वगैरह ने उस पर थोड़े बदलाव किए, जो कि शेयर में रिएक्शन भी आया। और चौथा सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये 7% का आंकड़ा भी शायद क्रॉस होगा, क्योंकि जो जो मोमेंटम है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हम लोग मेजर कर रहे हैं ग्राउंड पे, ग्रोथ का नंबर जो ये वाले क्वार्टर का भी शायद मुझे लगता है अपसाइड में थोड़ा सा 10-20 बेसिस पॉइंट सरप्राइज करेगा। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत एक वो वाली है कि ये हमारा पॉज काफी पहले आ गया था फेड से, और कोर इन्फ्लेशन में हर तरफ से मॉडरेशन है। तो मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा कि इलेक्शन से पहले शायद रेट कट साइकिल चालू हो जाए, अगर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन इसी तरह बिहेव करता है। ओके, तो ये आपके लिए सारे के सारे संकेत बाजार के लिहाज से आते हुए दिखे हैं। हेमांग जानी साहब भी हमारे साथ हैं। हेमांग सर, पॉलिसी के बाद बैंकिंग शेयर पर आपका व्यू? अनिल जी, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि एक 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 बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज ये रहेगा कि जो बॉन्ड यील्ड्स और जो ओवरऑल पोजीशनिंग है वो उसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। और बैंकिंग इंडेक्स ने निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है लगभग 4.5 से 5% की। मुझे लगता है कि ये वारंटेड नहीं है करंट हालात में। परफॉर्मेंसेस अच्छी है। ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स जो है वो पीक आउट हो चुके हैं। यहाँ पे भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में लोन ग्रोथ, स्प्रेड, ये सब में मुझे लगता है कि काफी स्टेबिलिटी है और वैल्यूएशंस की कंफर्ट है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और पीएसयू बैंक्स ऑल्सो, एसबीआई वगैरह। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, 7.24 है। तो मुझे लगता है कि मार्केट की जो टोन है वो पॉजिटिव रहेगी। इवेंट इज आउट ऑफ द वे। और अपार्ट फ्रॉम बैंक, मुझे लगता है कि मेटल्स या आईटी, ये सारे सेक्टर्स में भी एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। ओके, परफेक्ट। आइए एक राय इस बात को लेकर ली जाए कि क्या अगली पॉलिसी में ब्याज दरें घटने की कोई संभावना है या अगली पॉलिसी तक भी रूल आउट है? ये मैं एक बार जल्दी से एक क्विक पोल लेकर लेना चाहता हूं हमारे सारे एक्सपर्ट्स के बीच में। हाँ, इस पॉलिसी को देखने और सुनने के बाद बग्गा साहब, अगली पॉलिसी में पॉज या कट? नहीं, पॉज ही अनिल जी, क्योंकि बढ़ेगा इन्फ्लेशन, नवंबर और दिसंबर का बढ़ेगा, तो गुंजाइश नहीं है कट की। ओके, अतुल जोशी साहब? पॉज रहेगा। पॉज रहेगा, ओके। सुनील मेहता साहब? देखिए, जो प्रेजेंट हालात हैं उसके हिसाब से पॉज ही एक्सपेक्टेड है। बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि अगर ऑयल प्राइसेस का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो देन देयर इज स्कोप फॉर इंक्रीज। अदरवाइज जो ग्लोबल ट्रेंड है, क्योंकि फेड ने भी अपने स्टेबिलिटी लाना शुरू कर दिया है, तो उसको देख के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंटिन्यू करती है तो देयर विल बी अ पॉज। डेफिनेटली कुछ बड़ा बदलाव हो जाए ग्लोबल सिचुएशन में तो अलग बात है, अदरवाइज पॉज। गुरमीत सर? अनिल जी, पॉज रहेगा, बट बाजार जल्दी डिस्काउंट करना शुरू करेगा इन चीजों को, कि अगर एक तो रीडिंग और कोर इन्फ्लेशन की नीचे आई और यूएस पे भी अगर बॉन्ड यील्ड नीचे रहा, जैसे आप हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो बाजार जल्दी उसको फैक्टर इन करेगा। हमें बॉन्ड यील्ड्स को ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में चांसेस है जी रिवर्स होने का साइकिल। मार्च अप्रैल में चांस है, ओके। हेमांग सर?
देखिए अनिल जी, ग्लोबली अगर कोई इमीडिएटली कट की बात नहीं है तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज मुझे नहीं लगता कि आएगा। हालांकि जो ग्लोबल कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल और सर्टेन कमोडिटी, उसमें डेफिनेटली कूल ऑफ है, पर फिलहाल मुझे लगता है कि पॉज ही रहेगा। ओके, अतुल सर, एक स्टेटमेंट जो गवर्नर साहब ने दिया पॉलिसी में, उन्होंने कहा कि कोर इन्फ्लेशन को लेकर बड़ा कंफर्ट आ रहा है उनको, वो तेजी से जो घटा है, उसके क्या मायने हैं? सी बेसिकली अगर दोनों चीज़ों को हम देखें कि वो वॉलेटिलिटी पार्ट जो है, जो फूड का जो पोर्शन है, वो उन्होंने बहुत मतलब एक ही सेंटेंस में कहा कि वो उसको इग्नोर करना चालू करेंगे, उसको मेन पॉइंट नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो धीरे धीरे वही हो रहा है कि जो ऐसा कौन सा पार्ट है सीपीआई का कि जो स्टेबल है और जिसको मॉनिटर करना चाहे, तो वो बेसिकली नॉन फूड नॉन फ्यूल हो जाता है, कोर हो जाता है। तो बाय एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, जिसके ऊपर ग्लोबल प्राइसेस की काफ़ी इम्पैक्ट रहती है। दूसरा अगर हम देखें कि जो कोर है वो WPI से काफ़ी जुड़ा हुआ है। हमने एक ऐसा भी देखा कि पहले WPI से हम CPI के ऊपर चले गए थे, तो तब ये था कि WPI से आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं है, वो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन के ऊपर चला जाता है। तो आम आदमी जो खाता है पीता है, जिसकी उसको चिंता रहती है, वो हमको पॉलिसी का ये बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोर जो मॉनिटर कर रहे हैं, जो नीचे आ रही है, वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अच्छा है। जैसे उन्होंने कहा कि सप्लाई साइड जो पूरी मैकेनिज्म थी, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो अभी स्मूथ हो चुका है। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस भी दिख रही हैं, तो कोर स्टेबल रहेगा। तो उसको ही लेके वो पॉलिसी कांस्टेंट रखेंगे। ठीक बात है, तो पॉलिसी कांस्टेंट रहने की उम्मीद है। पहला कट बग्गा साहब कब तक देखने को मिलेगा? पहला कट जुलाई के बाद अनिल जी। देखिए, गुरमीत हैं, यंग हैं, पंजाबी हैं, स्क्वॉश भी खेलते हैं। मैं तो गुरमीत के साथ चलता हूं हर वक्त, बट इसमें सिर्फ होगा राहुल को मिस कर रहा हूं आज। तो गुरमीत आगे तो मैं खुश गुरमीत जी तो मार्च अप्रैल ही बोल रहे हैं सर। मैं वैसे खुश हो जाता हूँ। गुरमीत जी तो मार्च अप्रैल बोल रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ। गुरमीत यंग है तो वो मार्च अप्रैल कह रहे हैं, मैं थोड़े अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, जुलाई से पहले नहीं होता। मार्केट ने क्या किया है, जो स्वैप रेट है यूएस के और ईसीबी का स्वैप दिखा रहा है 6 बारी रेट कट। ये अनिल जी आप याद करिए 2022 में दिसंबर में, इस दिसंबर तक 3 रेट कट फेड के लगाए हुए थे मार्केट ने। तो मार्केट थोड़ा ओवर एक्सुबरेंट हो गया है। यूएस में भी इतनी जल्दी वो नहीं काटेंगे, क्योंकि उनका 2% कोर पीसीई, जो पीसीई देखता है आंकड़ा फेड, वो भी 2025 से पहले नहीं आता 2% पे। तो 2.5%, 2.25% पे अगर वो काट के बैठ गए और भगवान न करे थोड़ा भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर से मुंह पे कालक आती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जून जुलाई तक फेड काटता है और हम भी फिर फॉलो करेंगे। जुलाई तक होपफुली आरबीआई भी फर्स्ट रेट कट कर देगा, मार्केट डिस्काउंट पहले करना शुरू कर देगा। ये जरूर मैं गुरमीत से सहमत हूं। ओके, बेटर सेफ देन सॉरी। तो आराम से इंतजार करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। ये गवर्नर साहब का पूरा इरादा है। तो थोड़ा सा वक्त लगे, जुलाई तक ब्याज दरों में कटौती संभव हो सकती है। मेहता साहब, आपका कोई अंदाजा कब तक ब्याज दरें कटना शुरू होंगी? देखिए, जो आई एग्री विद कि ये इस फाइनेंशियल ईयर के बाद ही होने की संभावना लग रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बारे में जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने भी कहा कि हम कुछ जल्दबाजी में नहीं करेंगे। कई बार 2-4 महीने के आंकड़े अच्छे भी होते हैं, तो उस पर अगर हम ओवर रिएक्ट कर जाएं तो बाद में दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से दे विल वेट एंड वॉच कि हमारे पास में जो ट्रेंड है वो लंबे टाइम के लिए स्टेबल हो रहा है, डिक्रीजिंग इन इन्फ्लेशन, या नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो मार्च तक वेट करेंगे और मे भी जो नेक्स्ट जून जुलाई के अंदर जाके इसे कटाने का उम्मीद है। चलिए, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे गवर्नर साहब रेट कट करने के पहले। ये हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से पूरी की पूरी आती हुई। एक बार जल्दी से शो खत्म करें उससे पहले अब सुमित जी जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय आपके लिए आती दिख रही है पॉलिसी के बाद? अनिल जी, एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। कोल इंडिया के अंदर मोमेंटम यहाँ पे तेजी का बन रहा है। कोल इंडिया यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखा सकता है।
तो कोल इंडिया के अंदर 355 वाला कॉल अभी 12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। और कोल इंडिया में ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया में खरीदारी करें, स्टॉक में मोमेंटम है, यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। चलिए, तो ये है आपके लिए पॉलिसी का पूरा कवरेज, जहां पॉलिसी के बाजार मजबूत स्थिति में है। लेकिन जैसा गुरमीत सर भी कह रहे थे कि न बहुत बड़ी तेजी के मूड में आने की जरूरत है, न मंदी के जैसा तो कुछ है नहीं। तो जैसा मूड पॉलिसी के पहले था वैसा ही बनाए रखे, और वैसा ही है भी। पॉलिसी के ठीक पहले 20,975-80 के आसपास निफ्टी था, एक बार 21,000 का आंकड़ा हमने छुआ भी, वापस वहीं पर है। बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब, और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी 350 अंकों की कमजोरी। लेकिन एक बदलाव हुआ है बाजार में जो बताना आपको जरूरी है। लंबे समय बाद निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये हल्का सा फ्लैट होता हुआ दिखा है, लाल निशान में है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉडर मार्केट में आती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स भी जो 200-250 पॉइंट ऊपर था, अब 85 अंक ऊपर आया। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉड काउंटर्स में पॉलिसी के बाद आती हुई दिख रही है। लेकिन दिग्गजों में खरीदारी का मूड माहौल बरकरार है। ऐसे में विदा लेने का वक्त है। सुनील मेहता साहब, गुरमीत चड्ढा साहब, हेमांग जानी साहब, अतुल जोशी सर और बग्गा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिसी में आज हमारा साथ देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। और हमारे बाकी सारे मेहमानों का भी धन्यवाद, कुणाल जी, राकेश जी, पालिया साहब, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, और बाकी अगर किसी के मैं नाम भूल रहा हूँ तो उनका भी दिल से आभार। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस बड़े दिन हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। हाँ, मैं मिलूंगा, चिंता न करें, दोपहर का शो में करने वाला हूँ आपके साथ में। लेकिन तब तक मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आप सबसे निवेदन है अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद। स्टॉक मार्केट, हाँ? ऑप्शंस में खेलोगे बड़े मार्जिन से, ऑफ कोर्स मार्जिन में रिस्क का क्या, मैं जानता नहीं हूँ बॉस, तू कैजुअल है रे बाबा, तू मार्केट में मता, क्योंकि जब सीरियस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Girlfriend, huh? No. Just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, yeah? Then help me out, no? Of course I will. But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest, and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of 3 or more asset classes. Equity, which can be domestic and international, debt, and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund.